लिटिल पप्पी हीरोज। एक शांत सी गली में दो प्यारे पपी रहते थे, लिटिल प्रिंस और उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुनमुन। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और हंसते मुस्कुराते रहते थे। प्रिंस थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा किसी की मदद करने को तैयार रहता। चुनमुन बहुत खुशमिजाज और नटखट थी। वो हर मुश्किल काम को खेल खेल में कर देती थी। एक दिन जंगल के रास्ते में उन्हें एक छोटा सा पप्पी मिला जो रास्ता भटक गया था। वो रो रहा था, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। प्रिंस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। चुनमुन ने हंसकर कहा, हाँ, हम बहादुर हीरोज हैं। दोनों उसे लेकर लंबी सड़क चल पड़े। सूरज ढल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रास्ते में कांटों और पत्थरों से उनके पैरों में चोट लगी, फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि दूसरों की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। आखिरकार वे उस पप्पी के घर पहुंच गए। उसकी मम्मी ने प्रिंस और चुनमुन को ढेर सारा प्यार दिया और कहा, तुम दोनों बहुत नेक और मेहनती हो, हमेशा ऐसे ही रहना। और उस दिन से सब उन्हें लिटिल पप्पी हीरोज के नाम से जानने लगे। जहां भी कोई मदद मांगता, वहां सबसे पहले प्रिंस और चुनमुन पहुंच जाते, क्योंकि उनका मानना था सच्ची दोस्ती, मेहनत और वफादारी ही असली दौलत है। The kind-hearted puppy heroes. Once upon a time, in a peaceful village with tall green trees, lived a little puppy named Prince. He had soft golden fur and a big, kind heart. Walking right beside him was his best friend, Chunmun. She was cheerful and always had a bright smile that spread joy everywhere. Prince and Chunmun were inseparable. They played together, learned together, and dreamed together. But the most special thing about them was their kindness. If a puppy, like little Gus, lost his favorite rolling ball, Prince would always help him look. And if a puppy fell down, like little Mia, Chunmun would rush over to hold their paw and cheer them up until they felt brave enough to try again. One sunny afternoon, they were walking when they saw a tiny puppy, Pip, sitting on the side of the long road. He was crying because he couldn't find his way home. Without wasting a moment, Prince gently held Pip's little paw, and Chunmun leaned down with her biggest, brightest smile and said, "Don't worry, Pip. We are with you." Together, the three friends walked and walked. They kept a lookout for anything that looked familiar, until they saw a cozy little yellow house ahead. That was Pip's home. His grown-up puppy family rushed out and thanked Prince and Chunmun with happy tears and the warmest, softest hugs. The news spread quickly. From that day on, the whole village called them the kind-hearted puppy heroes. Prince and Chunmun continued to spread love, loyalty, and friendship everywhere they went, proving that even the smallest hearts can do the biggest kindness.